Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories from this week's episode. People's lives go to rack and ruin due to corrupt activities of government in illegally occupied Gilgit-Baltistan. Resentment at its peak among people of Electronic Department in illegally occupied POK. Authorities in J&K pushing for increased tourist footfall. J&K authorities working for empowerment of specially abled. And later in a section of Incredible India, we'll take you to witness the celebrations of the Khelucharan Mohapatra Award Festival in Bhubaneswar. Corruption remains a key component of the never-ending hardships of the people in the illegally occupied Gilgit-Baltistan. While projects like infrastructure development and providing basic services to the people, which was supposed to be at the top of the government's agenda, have taken a back seat. Islamabad and the officers it has installed in the region are working overtime to fill their own coffers. We have a report. Anger is simmering in the illegally occupied Gilgit-Baltistan. On one hand, they are boiling over the subsidy cut on wheat. On the other hand, they are demonstrating against the government's unjust tax hikes. Pictures of piles of grain without any movement of trucks, noticed by local people, have triggered suspicion. People have urged the government to expedite an inquiry into the issue and have threatened widespread demonstrations if their demands are not deemed serious by the government. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उस महंगाई के या इस यहाँ गंदम के क्राइसिस की वजह से पिस रहा है वही गरीब। यहाँ पे गरीब से ज्यादा तो अभी यहाँ पे एक ट्रक मुझे आप ये बताइए कि गाकुश में कम से कम रोज के हिसाब से तकरीबन नहीं है तो 5,000 4,000 डेली बैग्स बिक रहे हैं, आटा बिक रहा है। मगर यहाँ पे मैंने तो आज तक कोई ट्रक अनलोड होते हुए मैंने नहीं देखा है। तो ये आटा आता कहाँ से, ये हमारा शक पड़ रहा है। कम से कम इसके ऊपर थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और यहाँ पे लोगों के ऊपर क्राइसिस के बातें करने के बजाय वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करके उनको यहाँ पे थोड़ी सी रोकथाम करने की जरूरत होगी। A number of protests against a cut in the subsidy on wheat are already underway in the region. The government, however, has chosen to do what it does best, turning a blind eye to the plights of people of this region. Protesters say the government has neither restored the wheat quota nor is taking steps to curb rampant corruption. Many in the region, especially the elderly, say that they have come to terms with the discrimination meted out against them by the local as well as the federal government. However, the situation, they complain, is worsening by the day. It is not just about the wheat shortage or tax hikes, but every sphere of their lives has been deeply affected by the anti-people policies framed by Pakistan. Infrastructure is in shambles. Dilapidated roads have taken a huge toll on people's lives. They are forced to buy flour at exorbitant prices due to its poor supply at ration depots. गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर एक असेंबली बनी हुई है। वो तो एक समझ लो बेजान असेंबली थी। जब से आई है आज तक इनके कोई एक कानून साजी गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों की मफाद में इन्होंने किए हैं तो बताए। सिर्फ अपने तनख्वाहों की कानून साजी की हैं। यहाँ पे 20 लाख की आबादी जो है इस वक्त मुतासिर हैं। यहाँ पे रोज़ बरोज़ गंदम को काट के कभी 40 केजी था तो फिर कभी 30 केजी है, कभी 20 केजी है। Till date, Pakistan has only plundered the resources of the region, but has done nothing for the development and betterment of its people. The administration has also ensured that people in this illegally occupied region continue to reel under its misrule that provides a life riddled with discrimination and misery.
While resentment is at its peak among the people of the Electronic Department and illegally occupied POK, the employees staged a hunger strike camp in front of the office of the Chief Engineer Electronics against the non-payment of salaries for months. The workers have threatened the authorities with suicide if they were not met with their demands. We have a report. The deferral and non-payment of salaries continue to remain an issue of concern in the illegally occupied regions of POK. Anti-government sit-ins have become a recurring phenomenon. One day it is the teachers, the next the doctors, and on other occasions the employees of one or the other government department. They lament that the government deliberately deprives them of their rights and remunerations. And with a corrupt system in place, they have no option but to take to the streets. These employees in this picture are from the electricity department, who allege that their employers, in this case the government, haven't paid them their full salary even once in the last 2 years. अगर महकमे की यही रवश है कि ये महकमे के मुलाजमीन वाजपेयी मुलाजमीन जब तक फौत नहीं शहीद नहीं होते इनको हम कुछ नहीं देंगे, तो उस वजह से हमने कहा कि अगर इन्होंने शहीद करके हमें देना है तो हम भूख हड़ताल पे इस वजह से बैठे कि हम भी शहीद होंगे। तो पीछे से हमारे वरसा को भी है कि पोस्ट और 50-50 लाख रुपया ये देंगे, क्योंकि इसके अलावा ये महकमे की रवश बन चुकी है कि इन मुलाजमीन को किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं करनी, ना ही उनकी 2 साल से ना ही हमारे तोसीक की जा रही थी, ना ही हमें तनख्वाहें दी जा रही थी। हमारे बच्चों की ये सूरत हाल है कि वो भूख हड़ताल से फाका कशी पे स्कूलों से निकाल दिए गए, उनकी 6-8 माह की फीसें बकाया, जिसकी वजह से ना तो उनकी हम किताबें ले सके, ना उनको खाने के लिए कोई दे सके। It is not an isolated case of discrimination. The people of the region, who have to perform exceedingly well, far better than their privileged compatriots from Pakistan, in order to get themselves recruited into government departments, are subject to different forms of state atrocities after joining them. Officials who have primarily been placed in the government departments of the region to surveil and marginalize the locals do not treat them on par with people or employees from parts of mainland Pakistan. Corruption is widespread, and unscrupulous authorities who are at the helm of affairs don't show even a modicum of intent to alter the status quo. हमने इस बेबसी के आलम में हम आके इधर बैठ गए और इस वक्त तक ये बेबसी का ये आलम है। चीफ इंजीनियर खुद आप मुजफ्फराबाद जो है वो बाग के दौरे पे गए हुए हैं, उनको हमने 15 दिन पहले पूरे ज़ात कश्मीर में आला ब्यूरोक्रेसी, IG ज़ात कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर इन सब से चीफ सेक्रेटरी साहिबान सबको हमने नोटिस जारी की कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन मासवाई कमिश्नर ज़ात कश्मीर मसूद रहमान साहब के अलावा हमारे से किसी ने रब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा कि बच्चों हम आपके साथ हैं, आपका जायज़ मुतालबा है, हम इसके साथ जो हुआ हम इसके साथ पूरा तावन करेंगे, लेकिन आप ये हमने महकमे को लेटर भी लिख रहे हैं, लेकिन उनके लेटर लिखने के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। People of this region have been under Pakistani rule since 1947. However, the fact is that they have been relegated to the status of second-class socio-economic citizens. And next we move on to Jammu and Kashmir, which is a popular tourist destination and is one of the most beautiful places on earth. There are a ton of tourists who come here annually from both India and abroad. Tourism is the state's second largest revenue generating sector after agriculture. To increase tourism in Aharbal, the Kulgam District Administration organized Aharbal Mela in the area to promote tourism in the valley. Have a look. After being stagnant for about 3 years, tourism sector in Jammu and Kashmir has picked up pace with record footfall of tourists this year. The J&K Tourism Department has constantly been taking steps to promote areas that have the potential of becoming a great tourism magnet.
One such area is that of Aharbal in Kulgam district, which boasts of lush green grounds and waterfall. Recently, the Kulgam district administration organized a Aharbal Mela in the area to promote the beautiful destination as a tourist place. ये हम पिछले साल से हम लोग ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुलगाम में, स्पेशली जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, जो कि ऑनरेबल अलजी साहब ने अहरबल को एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन बनाया है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट्स को यहाँ पर वो आए, यहाँ की खूबसूरती को देखें और जो यहाँ का इकॉनमी है, जो टूरिज्म के साथ लिंक है, उसको बढ़ावा दें। तो आज हम लोगों ने एक हट की प्रोग्राम किया था कि हम लोग अहरबल मेला करें। Organized near the Aharbal Waterfall Park, the fair witnessed the participation of people from different walks of life along with many tourists who visited the valley. The first edition of the festival was organized last year, which received an amazing response from locals as well as tourists. Multiple stalls were also installed by various departments including agriculture, horticulture, sheep, animal husbandry, tourism, Khadi and Village Industries Board, apiculture, floriculture and handicrafts. A number of entrepreneurs also set up their stalls to promote their business in the valley. Handloom products were also at display that promoted the local traditions and culture of Kashmir. हमारा जो ये डाइट कुलगाम की तरफ से है। डाइट कुलगाम बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो टीचर्स को ट्रेन करता है और बच्चों को जो अवेयर करता है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम ये स्टॉल यहाँ पर लगा दें ताकि हमारी आने वाली पौध जो है, हमारे जो आने वाले बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, वो ये समझें कि हमारे रूट्स क्या थे, हमारी विरासत क्या थी, हम कहाँ से आए, हमारे पेरेंट्स मतलब क्या करते थे। तो इस चीज़ में टूरिज्म का अगर आप देखेंगे कि हमारा हेरिटेज रूम है कुलगाम में, डाइट में ही एक रूम है, बड़ा हाल है हेरिटेज, जिसमें हमने ये सारे आइटम्स रखे हैं जो आपके सामने हैं। ये आइटम्स जो हैं इनसे काफ़ी बच्चों ने ये कि मतलब फ़ायदा नहीं कहेंगे हम, के उनको इंस्पायर हो गए। A number of competitions were also organized at the fair where students from various schools participated. A painting competition was held which attracted a lot of tourists. Also, groups of young boys participated in cycling and trekking events that were flagged off by Dr. Bilal Moyuddin Bhatt, the Deputy Commissioner of Kulgam. उन्होंने ये एक अच्छा कदम उठाया, जैसा कि आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि अभी तक यहाँ पे 2 फेस्टिवल्स हो गए। एक लास्ट ईयर हुआ था अहरबल फेस्टिवल, उसके बाद यहाँ पे हुआ था विंटर फेस्टिवल, और आज ये फिर 2022 का जो हुआ यहाँ पे अहरबल फेस्टिवल। इसका जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आपने भी देखा होगा रिसेंटली जो यहाँ की अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक फिगर दिया था कि लाखों में लोग जो हैं बाहरी स्टेट से यहाँ पे विजिट करने के लिए आए, यहाँ पे घूमने के लिए आए। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि जो डीसी साहब का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये अहसनुल इक़दाम कदम था, ये रंग ला रहा है दिन ब दिन। एक अच्छा फेस्टिवल चल रहा है, तो हम लोग नीचे भी गए, वहाँ पर जो वाटरफॉल है वहाँ का एंजॉय किया, बहुत अच्छे सीनरीज थे। उसके अलावा यहाँ पर जो ये भी शॉप्स लगी हुई हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं और बच्चे यहाँ आए हुए हैं स्कूल के, वो लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, जो उनकी एक्टिविटीज चल रही हैं, उसको हमने एंजॉय किया। जो लोग फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं, वो यहाँ आकर देखें कितना सुंदर है हमारा कश्मीर और कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, कितना प्यार है, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा और महसूस करने को मिलेगा। तो आप सब यहाँ आएँ और इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच आकर के उनको बताएं कि हम लोग एक हैं और हमारा हिंदुस्तान एक है और सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। The district administration is making concerted and coordinated efforts to promote potential tourism destinations like Aharbal. Tourism will not only increase the economy of the region as well as the state, but will provide employment opportunities for the unemployed youth and make them independent.
And aids and assistive devices for the empowerment of specially abled people and bringing them into the mainstream of society have always been one of the topmost priorities of the J&K government. Working on the same lines, a camp was recently set up by different NGOs and organizations along with the government support for the specially abled people of the region. The event also witnessed the presence of Lieutenant Governor Manoj Sinha. Have a look. The government is making dedicated efforts to bridge the gap between the aspirations of the citizens and the administrative delivery for the development of an inclusive society in Jammu and Kashmir. As a part of this initiative, Lieutenant Governor Manoj Sinha inaugurated a free artificial limbs and calipers distribution camp at the Sher-e-Kashmir University of Agriculture, Sciences and Technology, Skuast, Jammu. The event also marked the birth centenary celebrations of late Dr. Uttam Chand Shastri ji, a great Sanskrit scholar from Jammu. The Lieutenant Governor appreciated Chudamani Sanskrit Sansthan Basholi, Shri Kailakh Jyotish Avim Vedic Sansthan Trust, Mahavir Seva Sadan and Abha Bagrodia Charitable Trust for their remarkable, selfless and noble initiative for the cause. मैं पूरे आयोजन समिति के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और महावीर सेवा संस्थान, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान और कालख ज्योति संस्थान ने मिलकर के एक सराहनीय काम किया है और उन लोगों ने ये भी भरोसा दिया कि आगे भी इस तरह के कैंप आयोजित करके जो दिव्यांग जन हैं जम्मू कश्मीर के, उनको चाहे प्रोस्थेसिस हो या आर्टिफिशियल लिम्स हो, इनको लगाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि पूरे समाज के लोगों को आगे आकर के इस तरह के कामों में सहयोग करना चाहिए। The Social Welfare Department is implementing a comprehensive plan to reach out to the beneficiaries. A special enrollment campaign was also launched for fulfilling the purpose. With dedicated efforts, the number of beneficiaries receiving benefits has doubled over time. Jammu and Kashmir has also been linked to the National Trust portal so that all the facilities and rights are granted to the territory by the central government. Authorities keep on organizing a number of different initiatives and programs in the valley, even in the most far-flung areas, to assist the specially abled citizens and help them make their lives comfortable. ये तो बहुत अच्छी बात है। J&K में वैसे पहले भी ऐसे कैंप लगते हैं। इस बार कलकत्ता की टीम ने कैंप लगाया है और इनका सामान भी जो पहले से इम्प्रूव्ड है और हम चाहते हैं ऐसे और भी कैंप हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज पे लगे हैं तो अच्छी बात है। अब जो दूर दूर से आने होते हैं पेशेंट, वो कुछ नहीं भी आ पाते हैं। अब ये लोकल अराउंडिंग ही थे, कुछ बसोली से आए थे, कुछ आगे पीछे रजौरी पुंछ से भी आए थे, गुलाबगढ़ से भी पेशेंट्स आए थे, सब कुछ हुआ। मगर अगर उनके होम टाउन्स में ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएं तो उससे अच्छी, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, किसी कारणवश जिनके अंग नहीं रहते हैं, एक्सीडेंटली या कईयों के जन्म से होता है, उनकी हम देखते हैं कि लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। और एक आजकल क्योंकि साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, ये जो आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाते हैं उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो सरकार के प्रयास हैं उसमें भी हाथ बटा सकते हैं हम, और ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ करना। जैसे आभा बरगोडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक पहल की कि इस तरह का कैंप उन्होंने जम्मू कश्मीर में आयोजित करने का एक प्रस्ताव रखा, जिसका चूड़ामणि संस्कृत संस्थान ने पूरा सहयोग दिया। The Jammu and Kashmir's government is committed towards providing more facilities to its citizens, especially to those seeking assistance. Last year, the government distributed a total of 4,000 motorized tricycles to provide accessibility to specially abled across the Union Territory. This year, in the month of July, 1,000 motorized cycles were added to the count. A number of specially abled J&K citizens have been brought under the ambit of the pension scheme, which provides them ₹1,000 monthly. Beneficiaries are happy as these initiatives have made their lives better. इससे बैलेंस में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, तो चलने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर चल सकता है। ऐसे बैकबोन में ना दर्द होती है जब ऊंची चढ़ान हो या ढलान हो, तो उसमें बैक पे जोर पड़ता है। तो इससे थोड़ी मदद हो जाती है कि इसमें थोड़ा बैलेंस बन जाता है और स्टिक की मदद से थोड़ा बेटर चल सकता है।
हम जैसे आदमी मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है इसमें कि हमारे ऐसे भाई बहन भी हैं जिनके बेचारे की टांग इधर से कट गई है, इधर से कट गई है, और जिस संस्थाओं वालों ने उनकी हेल्प की है। Selfless efforts to help others in need are the true service of mankind. It is the primary responsibility to mobilize sources for the specially abled and create infrastructure and facilities to make them equal partners in the nation's development journey. The state of Odisha has brought to stage some of the most mesmerizing dance and musical festivals that speak volumes of the culture and traditions of the country. Organized in the honour of classical dancer and musician Guru Kelucharan Mohapatra, an award festival is held every year in Bhubaneswar city of Odisha, where artists present their crafts and are felicitated for their contribution to the cultural scenario of India. The atmosphere of the Rabindra Mandap in Bhubaneswar city of Odisha reverberated with the symphony of melodious classical numbers as a number of artists from all over the country presented their craft on this prestigious platform. This scene was witnessed at the 28th edition of the OMC Guru Kelucharan Mohapatra Award Festival, an event which promotes and honors artists who are contributing to the Indian classical dance and music scenario. Instituted by Shrajan, the event came back to the stage after being organized virtually for the last 2 years due to the pandemic. ये जो OMC गुरु केलुचरण महापात्र अवार्ड फेस्टिवल है, उसका ये खासियत है कि हमारे गुरुजी गुरु केलुचरण महापात्र जी सिनेमा, म्यूज़िक, थिएटर, डांस के साथ जुड़े हैं। तो उसी क्षेत्र से जितने भी कलाकार हैं उनको जूरी के माध्यम से चयन करके फिर बाबा के नाम पे, मतलब गुरुजी के नाम पे अवार्ड दिया जाता है उनको हर साल। और ये 28th ईयर है और हर साल बाहर से बहुत सारे कलाकार लोग यहाँ आते हैं, उड़ीसा में उनका कला का प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ का भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस मंच पर प्रदर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि इट बिकम्स ए अमलगम ऑफ कल्चर, डिफरेंट कल्चर, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, और एक बॉन्ड क्रिएट होता है हम लोगों में। हाँ, मतलब जैसे महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तो हर राज्य के साथ हम उड़ीसा वासी, उड़ीसा हम लोग जुड़ जाते हैं। This year's program included a diverse confluence of music, dance and art performances. The inaugural evening witnessed a mesmerizing musical performance by Pandit Ronu Majumdar, who played the flute, and Ustad Tawfiq Qureshi, who was on the djembe. Another notable performance was that of Padma Shri awardee Geeta Chandran and her ensemble Natya Vriksha Dance Collective. The ensemble presented a new version of Bharatnatyam, where traditional moves were performed on Western classical tracks. भरतनाट्यम की वोकैबुलरी को रखते हुए, ऋतु संहार जो कालिदास का है उसका कंटेंट रखते हुए म्यूज़िक, लेकिन हमने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक यूज़ किया चाइकोव्स्की का। तो इसमें हमने बहुत जगह इसकी प्रस्तुति करी है और बहुत लोगों ने सराहा है। तो हमने कहा ऐसे मंच में उसको करने से कैसा रहेगा। हम भी थोड़े से इसमें थे, लेकिन आपने तो देखा किस तरीके से ऑडियंस को ये बहुत अच्छी लगी। तो मेरे ख्याल से नृत्य जैसी एक पारंपरिक, एक ट्रेडिशनल हमारी जो धरोहर है, ये बहते एक रिवर की तरह है। हम बैंक्स डिफाइन करते हैं, इसकी वोकैबुलरी डिफाइन करते हैं, लेकिन इसका बहाव जो है वो बहते रहना चाहिए। Srishti Swarpa Mishra, a young rising Odissi vocalist, gave a melodious performance that left the audience spellbound. She commenced the recital with the Saraswati Vanda before moving to Raganga Gayan and sang in Rag Mukhari and Ekatali. Her final presentation was a popular Odissi composition, Nahi Ke Kari Dela. Audiences and art lovers were enthralled to witness the wide variety of performances, which were a beautiful portrayal of arts and culture. It was a wonderful evening. I've come all the way from Kolkata, and I didn't expect that right on the first day itself I'll be treated to this beautiful music.
by Ronu Majumdar and also by Taufik. And it was really good. And the young tabla player was just wonderful. And I have no words to express my feelings. And the audience enjoyed it like anything. And that was also another experience, to see the reaction of the audience. And since I'm a writer, I'll be writing on all those things. This is one of the most significant and important festival in Bhubaneswar. And you can see the best of the dancers and musicians performing in this festival. So today it was a wonderful Odissi recital, not done by a great artist, but a young artist. Sushri Swarupa, she did a fabulous recital today, and she brought out all the nuances and the brilliance of Odissi music in her tonal expression. And as usual, Geeta Chandran is a veteran Bharatanatyam dancer, and she brought her groove with a piece of experiment and 3 very traditional pieces, and wonderful synchronization, wonderful presentation skill, and beautiful group work. So it's a wonderful evening to enjoy. This year, maestros like Guru Niranjan Roth and Guru Ram Haridas were felicitated for their invaluable contribution and Lifetime Achievement Award in the fields of Odissi dance and music respectively. Guru Kelucharan Music and Dance Festival not only is a platform for artists to present their crafts, but also plays a major contribution in spreading awareness about the culture and heritage of Odisha on various national and international platforms. Well, that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.